is not narrative enough. It is interaction. So again, I'm sorry for asking you very very but please. इस पे ये थोड़ी सीरियस रूप से सर इस पे बात पे आते हैं तो वेट आउट करेंगे लेकिन मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि आजकल ना वी गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पॉलिटिकल सिचुएशन ओवरऑल जो एनवायरनमेंट एक्चुअली आप लोगों को रिलेट कर सकें हम कि यंगर लॉर्ड्स स्पेशली ये हमेशा ही मुश्किल है यार ये बड़ी अच्छी बात है अगर मैं अगर आपको ना कहते तो मैं तो नंबर बना लेता यही बात है कि ये कब मुश्किल नहीं था ये मैंने कोविड हो रहा था आई डिड लॉट ऑफ वर्क विद कोविड एज इन द यूएस सम रिसर्च वगैरह कोविड के बाद दुनिया क्या होगी क्या होगा ये वो एंड आई वुड ऑलवेज से कि यार कि लोग कहते हैं ना हमने कोविड से वापस निकलना है व्हेन विल वी गेट बैक ये अच्छे खासे अहमद लोग क्योंकि कोविड से पहले बहुत अच्छे थे मसाइल सारे हाल थे सब अलग चल रहा था राइट सो ये शॉक्स तो अपॉर्चुनिटी होती है बट द सेम इन पाकिस्तान आई मीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई थिंक दो रियलिटीज है एंड आई वुड हाईलाइट बोथ और मैं नारेबाजी की बात नहीं करता एक ये कि मुझे भी कोई ज़माना ऐसा याद नहीं है कि जब मैंने ये सुना हो या कहा हो कि सब बड़ा अच्छा है इस वक्त हम परफेक्ट हैं कोई मसला नहीं हमेशा यही होता था कि यार ये वक्त बड़ा मुश्किल है ना उसकी एक नेगेटिव ये है कि वो वक्त बाद जो और मुश्किल हो जाता है पिछला वक्त जो है वो अच्छा नहीं लगता है आदमी भूल जाता है तो अंग्रेजी में कहते हैं कि टाइम यू रीच रॉक बॉटम समवन मूव्स टू बॉटम लेकिन दूसरी चीजों पे कोई ये तो अच्छा है दूसरी चीज एक्चुअली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि at each of those points they have some things to celebrate मेरे उस्ताद के डॉक्टर अदील खान उस्ताद इन द सेंस कि वो डेवलपमेंट में giant in Pakistan and globally I remember उन्होंने once he told me कि यार we have to learn छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखो क्योंकि दुनिया जो है वो एक बड़े धमाके से नहीं तब्दील होती वो छोटी-छोटी खुशियों से चेंज होती है टूटती भी उसी तरह मसले भी इसी तरह होते हैं ऐसा नहीं होता कि एक गलती हो जाती वक्त करता है प्रोग्रेस परसों हादसा एकदम नहीं होता बट चेंज जो पॉजिटिव होगा भी एकदम नहीं so at each one of those times including today I can also count those small victories including मैं आपको भी लिस्ट बना देता हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज आर बेटर देन एट एनी पॉइंट नाउ दैट डजंट मीन कि जो चीजें नहीं बेहतर उनको हम भूल जाएं लेकिन अगर आप चेंज एजेंट हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं देन यू हैव टू डू बोथ ऑफ दोस थिंग्स टुगेदर कि कौन से पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जिसको मैंने लेके और बढ़ा सकता और कौन सी नेगेटिव रियलिटीज है जिसका कर्व लेके मैंने उसको ट्रीट करा we probably understood the सबसे important lesson sir कि there is always something to celebrate and there is always something to be fixed और यही चैलेंज और यही अपॉर्चुनिटी है जो कि सबसे एक्साइटिंग चीज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई भी जो नई चीज करने जा रहा है उसके लिए एक अगर मैं इस पे कमेंट करूं आजकल को मैं क्लाइमेट से मेरा ताल्लुक है क्लाइमेट अनफॉर्चुनेटली बैड शेप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड तो somehow हर हफ्ते कहीं ना कहीं से ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आर यू एन ऑप्टिमिस्ट जिस तरह कोई क्विज है आर यू एन ऑप्टिमिस्ट मेरा स्टैंडर्ड सवाल है यार दूसरा ऑप्शन क्या है ये तो हमारे पास कोई ऑप्शन है अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हो ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके और सब गलत करें सामने तूफान आ रहा है आपको नहीं लेकिन इफ द अल्टरनेटिव इज टू गिव अप तो फायदा की गेम की सो हमारे लिए तो चाहे हम पाकिस्तान में हो चाहे आप अमेरिका पे काम करते हो चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप हो ऑप्टिमिज्म इज in some ways a survival strategy. The issue with optimism is not that I make my optimism unrealistic, but I find कि मेरे सामने जो reality है जिसमें बहुत बड़ी चीजें हैं कुछ चीजें अच्छी भी हैं कुछ चीजें खराब जा रही हैं कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं कुछ नीचे जा रही हैं Do I have the ability कि जो सामने मेरा नेटवर्क कितना चीजें हो रही हैं जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है मॉलिक्यूल आ रहा है आइडिया आ रहा है मशीन आ रही है टेक्नोलॉजी आ रही है Can I capture that wave that I can build for? ये इंतजार करना कि हर चीज घटी चाहिए हो फिर आप इंतजार कर लो जब मुझे भी चला परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा ये जो मोमेंट इसी में काम कर बट इस मोमेंट को हर बार बेहतर बनाने की कोशिश करें राइट सो थिंकिंग अबाउट परफेक्शन इज ऑलवेज गुड कि
Never start with a goal that is less than perfect. But don't give up the good because you haven't got to the perfect. And it's a journey. What brought you to UET? Why you selected UET? और engineering की तरफ कैसे आए? Yeah, it's not mushkil काम नहीं होता. I was the biggest blessing with our parents. The biggest blessing is that I have been blessed with great teachers. मैं कोई काम नहीं ऐसा नहीं लगता है. I don't remember one of them. उस वक्त हम मजाक करते थे, समझ नहीं आता था, फिर समझते थे कि हम बड़े चीजें हैं. कई बातें वो 40 साल लगते हैं समझने में. जिस टीचर ने मुझे मैथ में फेल किया उसने मुझे एमआईटी में एडमिशन दिलवाई. ट्रू, शगुल हसन Number college football. English marketing. I got failed by him. वो चौक मारते थे, अलग नहीं मारना चाहिए. बड़ी बार चौक है. And then he took me under his wing and remember एक summer उसके बाद क्योंकि मैं पीछे रह गया था. And he personally coached me out of personal. But एक तो खैर वो है ना all UET में काम में it is amazing. कदर करें इसलिए कि इस तरह की चीजों की कदर करनी चाहिए. We don't know when we are learning. कई बार बड़ा वक्त लगता है to understand way more. लेकिन दूसरी भी क्वेश्चन सॉरी आता है ना कि इंस्पिरेशन हाँ हाँ you need inspiration या दो ऑप्शन होते थे सवाल पर उसके बाद में तो अच्छा बड़ा आसान होता है या आता है कि नहीं आता आता है तो साइंस कर लो दो ऑप्शन या डॉक्टर बन जाओगे इंजीनियर बन जाओगे दिखा राइट. सो डॉक्टर मेरा बड़ा भाई बन रहा था और इंजीनियर मैंने का लिखा लेते तब तक साहब मेरे चले पड़ गए तो इसलिए मैं जब आपके थोड़े से नंबर आ जाएंगे फिर उस माने में तो और भी आसान. वो बेस्ट यूनिवर्सिटी वही थी और उसमें जो है नंबरों के साथ से एडमिशन होता था. तो आई डिडंट इवन सच्ची बात है मेरे ख्याल में आई वेंट इन नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग होती है. मैं समझता था वो आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग शेडिंग दूसरा होता है. So अगला मेरा आपसे मासूमाना सवाल ये बट आई वाज वेरी हैप्पी आई डिड प्लीज कि सिविल इंजीनियर तो ब्रिजेस बनाते हैं वो तो जनरली एनवायरनमेंट खराब करते हैं. आप सॉफ्ट ब्रिजेस बनाने लग गए सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद और आप तो एनवायरनमेंट को ब्यूटीफाई करने लग गए. तो ये कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ? बिल्कुल वही कर रहा हूं जो मैंने पहले से सिखाया था. भी मैंने काम किया डिग्री चेंज कर लेता हूं दैट इज इंजीनियर. बिल्कुल तो लेकिन इंजीनियर क्या करता है इंजीनियर जो है वो चीजें देखता है और सोचता है कि यार किस तरह चल रही है इसके अंदर क्या ये तो पेन है ये जब मैं ये करता हूँ उसके अंदर क्या होता है राइट. समझने की कोशिश करता है वो क्यों और फिर समझते समझते उसको तोड़ देता है. फिर कहता है भाई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा राइट. जुड़ने के चक्कर में उसको समझ लेता है उसको समझने के चक्कर में उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर लेता है राइट. उसके बाद वो ब्रेक बना लेता है. अब आप मुझे टाइम में अगर अभी कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज के साथ या एनवायरनमेंट के साथ या पब्लिक पॉलिसी के साथ या एजुकेशन के साथ हाउ इज दैट. So, as I said, I have 5 college degrees, all 5 of them are different fields, but they are all related. Journey is very like I started as a civil engineer, and I loved it. Right? Yeah, आप साथी कहते हैं whatever because इंसान ज्ञान को करते हैं समझते हैं. I did love it. बड़े-बड़े डैम बनाने का मुझे कभी नहीं शौक. But engineering ज़माने उसके बाद I was very lucky कि पाकिस्तान में पहली environment policy बनी थी national conservation strategy. So मेरी उधर जॉब हो गई and basically मैंने इसलिए किया कि मैंने कहा कि यार इस्लामाबाद में मैं बैठ के जो है सीसेस की तैयारी करूँ. And that got me interested in that. And that's when I realized I needed. I was interested in this civil में water is very big. So water is what I was doing. So progression हुआ. Then I went off. I did civil and environmental engineering. Civil department, I was environmental engineering. While I was doing that, because I was interested in policy, I picked up a second degree in technology policy. So उसने मेरा थोड़ा वो broad कर दिया कि यार it was not a degree of technology की policy. It was a degree of technology and policy. Technology की policy is not right. What is special about the policies about technologies? Is there something different? या वो ऐसे ही होती है not right. Because I was interested in
environment and policy, उस वक्त तक मैंने गेम समझ ली। गेम ये है कि दुनिया में पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं, खासतौर पे अगर आपको कोई मुफ्त पैसे भी दे रहे हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से निकलना। So on the side, I did a specialization from the Harvard Law School, and while then I did my PhD in public policy. So ये जो link है ये बड़ा progression, इसमें कोई change नहीं। But the point I want to make, and I'm sorry I'm going on, जो ये disciplines होते हैं ना, I think ये हमारी exactly है। आप समझते हैं कि लोग कहते हैं मेरा discipline ये कि ये इंजीनियर है, इसके साथ इंजीनियरिंग की जॉब ये करता है। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा लगता है कि इस जॉब के लिए ये चीज़ चाहिए। एज ए डिग्री आपको जॉब के लिए जाते हैं, या मुझे आया कि मुझे नौकरी लेने में बस ये डिग्री या नौकरी अगर चीज़ डिग्री अगर चीज़ डिग्री अगर आपने सही कमाई थी तो आप फिर मुझे बता देंगे कि आपको उसका कुछ सीखा कि नहीं सीखा। डिग्री तो मुझे जरूरी बताती है कि आपने कोर्स कर सीखी, आई विल देन टेस्ट इट आउट देयर। लेकिन द थिंग I'm pointing out is the progression is there. Each of these disciplines and each subject is a language. Right? So engineering is not a skill, engineering is a language. Business is not a degree, business is a language. History is not a subject, history is a language. Language का मतलब ये है, इसका आप computer language, actually आप computer language वाले business समझिए। उसकी एक ग्रामर होती है, उसके एक रूल होते हैं, उसके एक नाउन और वर्ब होते हैं, उसकी एक लॉजिक होती है कि इस लफ्ज से देखूंगा अगर ये काम। So engineering to me has been, मैंने एक दिन भी engineering की जॉब नहीं की और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा मैंने having been an engineer, right? Because it is a way of thinking. कि एक प्रॉब्लम आता है आपके पास, right? And luckily मेरे पास मेरी लॉ डिग्री है, मुझे कहती है प्रॉब्लम आता है तो फॉरन प्रूफ कर देना कि मेरा नहीं, right? That's a way of thinking. My policy degree immediately teaches me to give you mental CPU. वो जब चलता है वो कहता है अच्छा प्रॉब्लम आता है, जब भी बात आती है तो एकदम इसको रिलेट करो कि किस किस्म के एक्शन से किस किस्म का पॉलिसी रिजल्ट। मेरी इंजीनियरिंग डिग्री कोई मेरे पास चीज आती है, रास्ता ढूंढना हो या पेन ढूंढना हो या बातें करनी हो, तो कहती है यार ये जो मसला है ये क्यों है और इसका कौन सा पुर्जा किस चीज को चलाना। So economics is the same, right? Economics की अगर आप ट्रेनिंग में तो immediately आपका जो grammar है, right? कि Chomsky was, I was very lucky I got to work with him etc. उनका जो असली काम है वो ये language is not loves and grammar, it is a way of thinking. So all these things जो हैं जो आप कह रहे हैं, they are not unrelated. एक तरह से वो पुरानी जो फ्लॉपी डिस्क है ना, अब आपके पास ज्यादा फ्लॉपी डिस्क होगी तो आपने इस लैंग्वेज में नहीं चला तो आपने दूसरी लैंग्वेज में ट्राई कर लिया। एंड द मैजिक एक्चुअली हैपेंस इन माय केस, द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज कि जब मल्टीपल लैंग्वेजेस आप बोल सकते, राइट, तो फिर आप एक प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से चेक कर सकते। You said it beautifully, sir. कि multiple languages जो है ना वो आपको आपकी सुपर पावर करते हैं। I believe कि जो आपने multiple जो डिग्रीज करी और उनकी जो डाइवर्सिटी है दैट्स योर सुपर पावर। सो इसी तरह से हमारे यहाँ ये होता है जनरली कि कोई एक डिग्री करता है उसी ट्रैक में चला जाता है और उसकी सोच में भी डाइवर्सिटी नहीं आती। तो विद दिस डाइवर्स एजुकेशन में ना वो आपको डाइवर्स थिंकिंग एबिलिटी देती है। Yes, but I also don't want to जो कर रहे हैं उनका भी रीजन होता है, अंदर की म्यूजिक होती है उसको फॉलो करना, और वो एक फर्क किस्म की म्यूजिक होती है जो कहती है कि यार ये वाला सवाल मैंने हल कर दिया, इस सवाल के अंदर जो सवाल है मैं उस पे जाऊं, राइट? एंड दे पीपल सो कई बार मुझे अफसोस तरीके पे सवाल होता है कि यार अगर मैं एक ही उसमें लग जाता है उसमें डी करता, सो दिस इज व्हाट विल वेल फॉर मी। पॉइंट आई एम मेकिंग इज कोई एक रास्ता नहीं है। आई वुड बी वेरी वरीड कि अगर हर बंदा जो है वो कहे कि थर्ड में सब्जेक्ट चेंज कर ना, सब्जेक्ट रखने का वजह ये होनी चाहिए कि यार ये कर ही लिया तो मैं इसमें बैठा। आई थिंक प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा मैंने एक इसमें कर लिया तो अगला भी अब इसी में इसलिए करना है कि मजा तो मैंने पहली बार नहीं आया था। सो वो देन यू आर इन अ डिगिंग होल प्रॉब्लम, राइट? व्हेन यू आर इन अ होल द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू स्टॉप डिगिंग। लेकिन इफ यू आर नॉट इन अ होल, अगर आप कुआं खोद रहे हैं तो देन प्लीज कीप डिगिंग क्योंकि पानी निकलेगा।
सो वो आपने जज करना होता है कि आप हंस गए हैं गड़े हो या आप कुआं खोद रहे हैं। और अगर आप कुआं खोद रहे हैं देन यस, फिर तो नुक्ते के अंदर नुक्ता, नुक्ते के अंदर होता है। और उसका जो पैशन है वो वैसे होता है। आई टेल यू दिस, खुदा का बड़ा करम है, आई फील वेरी लकी टू बी अराउंड सम वेरी वेरी वंडरफुल स्मार्ट super wonderful people, super smart people. चाहे डिग्री एक हो चाहे 15 हो, I have never met truly intelligent, smart people who are not interested in things other than what they do. मैं ये definitive बात है। I have never met कारीगर होते हैं, कारीगर होते हैं। अब उसके लिए डिग्री जरूरी नहीं होती। कोई पढ़ के किताबें पढ़ के कर लेता है, राइट? वो बिल गेट्स जो चल गया ना भी, लेकिन वो हर साल अपनी बता देता है कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी और वो सारी उसकी फील्ड में है। कुछ जो है स्टीव जॉब्स करता है ऐसी उसकी है, लेकिन उसके पास मुशाहिदे की दूसरी चीज है, वो कुआं खोल रहा, बट he had this sort of amazing ability कि दुनिया में क्या है, राइट? वो आप अपने मुशाहिदे से कर सकते हैं, आप पढ़ के कर सकते हैं, आप डिग्रियों से कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, लेकिन आई विल sort of in a way challenge कि आपको सुपर स्मार्ट इन गुड सेंस बंदा नहीं मिलेगा जो इंटरेस्टेड ना हो दूसरी चीजों में, क्योंकि वो डेफिनेशनली गलत है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपनी कारीगरी जितनी बढ़ गया है उसमें स्मार्ट है नहीं। एंड द ग्रेट आइडियाज यूजुअली कम लाइक दैट, राइट? आप अपनी कहानियां पढ़ ले, फिजिक्स की पढ़ ले, केमिस्ट्री की पढ़ ले, आपकी ग्रेड की पढ़ ले, मेनी ऑफ दोस कहानियां एक बंदा है उसने सारी उम्र एक चीज पे काम किया है, फिर वो घर आ रहा था एक दिन दफ्तर से तो उसने कुछ चीज देखी सड़क पे, उसको एकदम ख्याल आया, राइट? या वो छुट्टी पे गया, उसने वहां देखा कि वो पानी जो है वो ये हो रहा है, उसको एकदम ख्याल आया, राइट? उस कहानी का एक मकसद, एक एक कंक्लूजन ये है कि ये बंदा जो है सारी उम्र सिवाय अपने काम में कुछ नहीं सोचता, राइट? और इस कंक्लूजन को हम भी हाईलाइट करते हैं, इसको अपने काम से इतना इश्क है कि ये उसके अलावा कुछ नहीं है। इस कहानी का एक दूसरा कंक्लूजन है व्हिच इज इक्वली वैलिड कि ये बंदा सोचता तो सारे का करता काम है, लेकिन ये इधर उधर हड़बड़ देता है, right? The person is always on, observing, right? And that's the magic. The magic is not कि आप 15 चीजें करें, the magic is not कि आप एक चीज करें, the magic is कि what you do with a passion. अब इसके बाद सर आप एक टीवी होस्ट शो किया था आपने और टेक्नोलॉजी पे किया, और जब टेक्नोलॉजी वाज वेरी नेसेंट स्टेज, वो एक्सपीरियंस कैसा था और ये पे जर्नलिज्म पे लर्निंग क्या थी आपकी? यार मुझे आप मेरी बात करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टिंग, लेकिन यस टीवी शोज की ये काफी की, और वो साइंस वाला तो बात भी की। आई स्टार्टेड स्पोर्ट, आई स्टार्टेड जर्नलिज्म विद स्पोर्ट्स, और मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, जैसे सारा बोला है, खेलना बोलना भी नहीं, मतलब जरा मुझे चुनने में 3 5 खिलाड़ी रख लेते हैं, लेकिन शौक बड़ा था, सो आई नीडेड टू मेक अ प्लेस फॉर माय सेल्फ एंड आई स्टार्टेड स्कोरिंग। और ये आगे कंप्यूटर से काफी पहले की बात, एंड आई गॉट गुड एट स्कोरिंग, बट नॉट ओनली गुड एट स्कोरिंग, लेकिन फिगरिंग आउट एज द मैच इज हैपनिंग कि इस नंबर का उस नंबर से क्या रन, कि रन रेट चलने का तो व्हाट दे आर यूनियन नॉट इन इशू, बट द शॉर्ट एंड ऑफ दैट इज कि व्हाट दैट गॉट मी एंड आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स, और उस बारे में बात करता हूं मुझसे मेरी मैथ्स के क्रिकेटर होते थे, स्टूडेंट को उसके एक्सपोर्ट्स है। तो मैं था 8वीं क्लास में, मैंने अपनी शराब से भी पकड़ी, एक कागज पे मैंने पाकिस्तान की सीरीज बोली थी वेस्ट इंडीज, उसकी मैंने वो स्टैटिस्टिक्स में, बट आई ट्राई टू सॉर्ट प्ले अराउंड विद स्टैटिस्टिक्स लाइक यू वर, अभी ये सारी आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, और वो मैं अपने पास ले गई, एंड आई थिंक ही वाज वेरी सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड कि आज की तो बच्चा नहीं था, but he was very intelligent. I was a teacher बड़े थे, and that was the first thing I ever thought. And then I got into journalism, but it was अच्छा माना। फिर मैंने क्रिकेट कवर किया, आप बारहवीं में और आप राजस्थान के साथ और जावेद मियांदाद के साथ मैच कवर कर रहे हैं, तो आपकी अभी शो बढ़ जाती है, तो शो के लिए nothing else, right? So Shahid sir was there, and he was also very kind. So my first test I covered मैं था 11वीं क्लास में,
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान फैसलाबाद में। So वो it was a to have people who will have faith. मैं उसकी नहीं कह रहा था just to I've always had people around me who have had more faith in me than I have, and that was the truth. But that led to the TV वाला thing. TV पे मेरे शुरू में एक आज sports पे थे, लेकिन उसके बाद I did a program called Imran नौ मना से बात पूछे। उसका basically theme ये था कि website was activity about young women was talented, all the guests of these guys, Frida Khan and Lily Hassan and Nusrat Fateh Khan and Hashim Khan and Jahangir Khan. And the idea was create integrational Islam, and they would call it this. But the program you are talking about was actually one I really liked. That was a piece तीसरी सदी उसका एक प्रोग्राम डॉक्टर बुफाइन पहले किया था, उससे पहले एक साथ करते थे, both of them were very fine mentors and they और ये बात है thinking about पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं, तो ये होगा 1984 नहीं 87 88 89 right 88 89 I was still at university, so we did a 13-part series called तीसरी सदी. So 80s में की जो अगली सेंचुरी आ रही है उसमें क्या है, and I think the clip you're talking about is वही computing के साथ है. But we talked about aerospace, we talked about shuttles, running to Masters. I still remember we did one episode where the whole thing was कि यार हम जा भी सकते हैं नहीं, ये दो सवाल है, टेक्नोलॉजी पहुंच सकते हैं नहीं, और फिर पहुंच के करेंगे, right? जो now things that seem possible. But I think it was a testament कि ऐसी बातें करते हो, जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी प्रिमिटिवली को प्रिमिटिवली, टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में तो आजकल कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. अगर मैंने टेक्नोलॉजी की किसी दौर पे रहना तो सॉरी मैं आपको सवाल कर दिया. लेट मी आस्क, अगर आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या मैं फंसी से कर देता हूं या दूसरों से करता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको टाइम मशीन दे दूं and you can transport but not come back from, right? I will send you there but you cannot come back any point in history. So technologically interesting moment के लिए आप कहाँ रहते? Would you be here? Would you be somewhere in the future? Would you be somewhere in the past? किसी ने बस ये आप कर रहे हो? I think. I'm sorry मैं आपको आइडिया कर रहा हूँ. In the time जब communication between people was something so new and novel. Like telephone, language? No. Telephone. और anyone अगर आपको मैं टाइम दे दूँ, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं. I will go maybe about 75 or maybe in the future, all go back in time, go around and make the Tesla. अच्छा. Elon Musk ने टेस्ला को अच्छा शुरू किया. वैसे टेस्ला टेक लो टेस्ला. One more. Anyone else and then answer this. जब बिटकॉइन बढ़ जाता है सर मैं सर क्या किसी वापस नहीं आ सकते. तो आपकी नॉलेज वही होगी मार्टा क्रैश के लिए तैयार है. और आप मैं तो हिस्ट्री में बड़ा क्रैश मैं बहुत पीछे जाना चाहूँ अराउंड 250 BC में जब राजा पोलिसिया लेकर से लास्ट टाइम मुझे नहीं पता कहाँ जाना चाहूँगा. मैं या तो यही रहना चाहूँगा. नहीं अगर सुनो क्या करते हैं क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है. Right? Not because it is more interesting, but because all times are interesting. Yeah, I understand. Yeah, I also would join you. Basically, a tools one wheel and steel and so on and so forth. वो probably मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो बड़ी slow थी, हल्की आंच वाला काम. The time I will go probably with Hasi is about 150 years. I do think our times are interesting. I'm not sure they are the most interesting. मैं कह सकता हूँ कि मेरे दादा ने जो दुनिया देखी, वो तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग. लेकिन हमने तो ये देखा कि जो चीजें होती थी उनको हमने स्पीड कर दिया. Everything can be speeded up. मेरा कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटिंग केस कर सकता है. मेरी जो मैं टीवी में देखता था मैं things have, but most of those things when you change आई है वो स्पीड की आई है, right? या वो मोबिलिटी की आई है कि मैं अपने फोन पे कर सकता हूँ. I mean unfit. बहुत सारी चीजें नहीं की है. Health science में बहुत सारा है. IT में much of it is about sort of speeding up things and making them more good. लेकिन मेरे जो दादे का बचपन कि जब पहली बार बिजली आई and it also spread very far. So a world where I moved from TV to YouTube
is interesting. But I don't think it is the same interesting as a world where there is no electricity and then there is. Or a world when there is no airplane and then there is. Right? So I think वो जो 150 साल पहले वाला था ना, उसमें भी मसले दूसरे जनरेशन वाले भी है। Right? मैं कई बार political conversation में कहता हूँ ये that 1914. But 1914 का एक कमाल जो था, so we think about it as World War was, कि knowledge was outpacing the human brain certainly. So if you think कि हमारा interesting है, so think about the turn of the last century. कि एक पूरी जनरेशन है बिल्कुल ये था, एक नई जनरेशन आ रही थी जिनके पास टोटली नई टेक्नोलॉजीज थी, रोज नॉलेज चेंज हो रही थी, राइट, पॉलिटिकल आइडियाज चेंज हो रहे थे, टेक्नोलॉजिकल टूल्स चेंज हो रहे थे. सो आई डू थिंक दैट इज, मैं आपको एक लास्ट अभी वेरी वेरी बैड कंग्रेचुलेशंस आपके कवरेज हैं जरूरत बहुत है. और दूसरे आई थिंक दे आल्सो वेरी वेल क्राफ्टेड. मैंने इमरान से रिक्वेस्टेड कि इस लास्ट साहब वाला प्रोग्राम को भी one of the finest, well, Salam Sahab, person we should all look up. I did some writing on him and one of the things I was amazed by was कि I believe वो 9वीं जमात में थे जब उन्होंने पहली बार लाइट बल्ब चलते हुए. Right. So वो जन के पास है, टीचर के वाले साहब हैं, he's a smart student, वो पढ़ ले. But he comes to Lahore and sees the working. पहले तो एक आधा होगा आसे पासे, but he is now for the first time in a world जहाँ कोई एक switch है जिसको होगा 9वीं जमात. ठीक. उसके बाद जब तक वो 15वीं जमात में है, 15वीं जमात में in still in Lahore, he is writing and publishing papers in international highly acclaimed journals कि एटम के अंदर क्या. Now that is a bomb. That is a bomb. And in a way ये wow है, in a way wow नहीं, क्योंकि इस कमरे में भी वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के किसी मोमेंट में पहली बार एक कंप्यूटर देखा होगा और अब वो कंप्यूटर के अंदर की बात है. So not only I'm saying that technology is one of the interesting. ना हमें ये जोम होना चाहिए कि हम बड़े चीजें, और ना हमें ये गलतफहमी होनी चाहिए कि पहले वाले टाइम में क्योंकि आपके माँ बाप ने बड़ा अब एक ऑफ द कप में से ये हम ना सारी फैसिलिटीज के नाम रखे हैं. So we named this auditorium as Texashla. The whole name of Texla was Texashla, and Texla University was the first known university in the world. So we named this auditorium as and Texashla. उसके पास आके आई थिंक मुझे कल बेरूनी है जिसने सर्कमफ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड पहली बार किया, राइट हियर हम जहाँ बैठे हुए हैं उससे क्या होगा 100 किलोमीटर पे होगा. ये कदर था 100 किलोमीटर पे. That is where for the first time a computationally correct measurement of the circumference of the earth was made. Method पहले आ चुका, but there wasn't a place for observation. क्योंकि आपकी plane थी. He certainly came to the worry जब उनका नजरिया निकाला. एक्चुअली बेसिकली सर वो लोकल कोई राजा था, वो एक वॉन्डरिंग अराउंड, उसने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, कैद कर दिया किले में, और वो किले में बंद था और he had idle time. That part I did. और idle time वो उस कलाकार की बॉडी को खतरनाक हो गया. No. वो वहाँ पे कैद था, उसके आगे horizon गोल कर रहा है, elevated place और गोल horizon. ये ऐसी जगह काम नहीं. So basically geometry का problem था, the math had been done since the Greeks, लेकिन the calculation was not. And the thing about that, algorithm की calculation is कि जो उसने calculation यहाँ से 100 किलोमीटर की की थी, is still अब जब हम space से कर सकते हैं, सब चीज़ से कर सकते हैं, it is nearly statistically correct. Less than 50 या 100 किलोमीटर का टेंशन है, और 6,700 है तो वो less than 50. And basically geometry का कमाल है, right? You need 2 points of observation and then you need to know where the celestial are. This is again I love talking to you, sir. कुछ फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा. मैं आपकी लाइफ जर्नी का फास्ट पेस. आप लाइफ जर्नी के बारे में दिल्ली में या मैं से हटना चाहता हूँ. नहीं, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि सर you are a hero, you are a star. लोगों को हम बताएं कि कैसे the making of a star, the making of a hero, ताकि लोग उससे सीख सकें. आप हम सारे कहीं ना कहीं some stage of your life can relate और सब कुछ सीख सकते हैं. तो मेरी कोशिश ये है कि सबके लिए कुछ लर्निंग हो रही है इसमें से. फास्ट फॉरवर्ड सर, फिर आप इंटर गवर्नमेंट जो पैनल था उसमें काम कर रहे थे, एनवायरनमेंट
early 2000s में you were writing on environment, talking about climate change, अब तो कोई मानता ही नहीं था. अभी भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ है, इलॉन मस्क है. So what's that experience और वो कितना challenging था जब कोई general acceptance ही नहीं है उस topic की. यार दो चार चीजें इसमें मैं कह सकता हूँ. एक तो स्टार से आता हूँ, एक्सेप्ट मेरे लास्ट नेम का मतलब है. उसके अलावा स्टार कोई नहीं था. लेकिन अगर कोई स्टार है भी तो आई थिंक स्टार जो आप व्हाट आई स्टार्ट विद इज द वे यू फ्रेज द क्वेश्चन व्हिच इज ब्यूटीफुल के हाउ स्टार है. यार बड़ी जल्दी होती है और बड़ा तपना पड़ता है. राइट, दैट इज हाउ स्टार्स आर. मैं अपनी कहानी नहीं कर रहा. कोई चीज नहीं टूटती है और बड़ा डर होता है और एक बड़ा सट्टा खाल और उसमें आग ऐसी लगती है कि उसमें आसे पास के वाले भी जो है बिना बुद्धि जो है. तो आप में से जितने स्टार बनना चाह रहे हैं वो जस्ट बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, शांत करती है, ऐसा नहीं है भी आके आपको प्रोफेशन का लगा देता है. So you have to go through that. That's just physics. But as far as my journey starts out, yeah, I think एक तो I think the biggest thing I've always had what I said before. I've always had great teachers. And my teachers, I mean, people at work, people in schools, people in life who just believe more in me. Again, वो शायद से like यार बच्चे को कह रहा है कि यार टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तब टेस्ट में बड़ी चीज होती है और तुम जाके क्या होता है. मैं मानता हूँ स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, which is true, right? लेकिन so that opportunity was important. The fact that someone is willing to give you that opportunity is important, right? And I think ये दुनिया में I can go through you को तो environment plan, right? My boss आता है, लेकिन I would always be surprised कि यार why does he believe कि मैं कर दूँ? कि मैं आपको मेरे ख्याल में हर थोड़े से सक्सेसफुल आदमी की एक शक जरूर होता है कि मैं वो फ्रॉड आया है रिकॉर्ड. क्योंकि पार्टली आप कहते हैं यार कि लोग क्यों मुझ में बिलीव कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि मैं उसी तरह हूँ जैसे ये. So that feeling is there very much. But on the thing about capital, so I said कि मैंने stumbling वाली डिग्री की है. I stumbled from civil engineering, इसमें water का interest हो गया, water का interest जो है वो LCS में बन गया. Environment was a new issue. Pakistan was the first country doing this. Again वो तीन बंदे की टीम हो तो आप कह सकते हो number 3 in the organization. Right? मैं सारी दुनिया का ये नहीं कहता था बाकी कोई नहीं. लेकिन you get another opportunity. That got me interested in the environment. By the time 92 comes along, Earth Summit Week, again I was पढ़ने का. I think the novelty was this developing country का आदमी है जिसको इसमें थोड़ा सा issue was growing and we grow with the issue like many of you have. Right? And ये issue choose करने का एक ही होता है कि एक तरीका ही होता है कि आप देखते हैं इस वक्त सबसे बड़ी चीज है और उसके साथ मिलती है. वो भी हो सकता है लेकिन उसमें एक कम से कम लाइवलीहुड ये है कि वो बिजी. Lots of other people are doing it, right? It's very much the entrepreneurial. या आप सोचते हो यार वो कौन सी स्पेस है जो ऊपर जा रही है. आप लोग उसको स्ट्रेटेजिकली सोचते हो, मैंने क्या उसको स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचा. But I was lucky that there was a field and I got it. But I think the winning formula always is you find the thing that you are so passionate about कि रात को जब 4 बजे उठेंगे तो वही वाला ख्याल होगा और जब आप सैर करने जाएंगे तो वो वाला ख्याल आप उसको अप्लाई करेंगे. You move forward with your passion. And that's just what happened. And then it was a series of opportunities and we issued grew with it. And it is amazing. मैं कल STI में talk कर रहा था. ऐसे किया मैंने तो अपने आप को धमकी दे दी. जब 30 साल पहले ये बात करनी शुरू की थी तो ये कोई बात नहीं कर रहा. अब जिन तारों के अंदर हम घुस नहीं सकते थे वर्ल्ड वाइड में घुस नहीं देता हूँ ये चीज की. अब उन्होंने अपना पूरा का पूरा मिशन बना दिया कि सर क्लाइमेट चेंज इज आवर मिशन, राइट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आवर मिशन. So remember and listen to your parents so that ये हमेशा ऐसे होता है, right? जो आप periphery से और ये I think आपकी field में I'm trespassing now. I think this is also beginning to happen in your certainly it's happening in climate change. Because suddenly from being the cool outside kid, you become the establishment. Right? आप लोग ये नीले पीले रंग करके जो है भी सोचते हैं हम बड़े यंग हैं और हम बड़े हिप हैं और हम बड़े आउट हैं, राइट? बट अब तो आईटी इज द एस्टैब्लिश्ड. अब तो बेचारा कोक बेचने वाला जो है वो परफेक्ट है, राइट? अब तो ये रंग सिर्फ कलर सीन है, सॉरी
जब ये शुरू हुई थी तब तो ये आपका बैच था ना कि हम फर्क है, हमें वो लोग सीरियसली नहीं लेते, तो हम फिर उन्हीं का मजाक उन पे करते थे, हम भी अपने आप को सीरियसली नहीं लेते। अब तो पीला पीला करना सीरियसली नहीं लेता मेरे जैसे कैसी चीजें मैंने करते। But what I'm getting at is this is a serious one. Okay, when industries or fields or technologies become mature, they become mainstream, and they become mainstream, then a lot of things changes. You know, the type of money that comes, for example, changes. The how busy the field is changes. So I see that in the climate world. It's certainly a Kudala scientist होने से वो एक central piece पर, right? चाहे कोई believe करे या ना करे उसकी बात से जरूर है. In many ways, I think आपकी फील्ड भी है. And that means कि if you are an entrant, it is more difficult in some ways. आज जो लोग शुरू कर रहे हैं उनकी मुश्किल है, मेरे को कोई और कर नहीं रहा. इसके बाद सर मेरा आगे मैं एक क्वेश्चन और फिर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे भी काम किया, इससे पहले राउंड्स में भी आपने काम किया, तो यू नो द यूथ ऑफ पाकिस्तान वेरी वेल. सो यूथ डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, हम इसके मैं कहूँगा इन बिटवीन समवेयर वी लाई, दैट्स वेयर वी आर डूइंग कंट्रीब्यूटिंग. लेकिन इसके साथ क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी को, अगर हम इन तीनों को आप से मतलब कोई लिंक नहीं कर सकता, एनवायरनमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट या यूथ डेवलपमेंट और फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आप कैसे लिंक करेंगे? Maybe, thank you. Yeah, I'm glad you mentioned lunch. One of the great privileges and honors of my life was to be entrusted to be the vice chancellor of Law University of Management Center. Best time in my life. बाकी भी मैं वो दो फ्यूजन बताता हूँ, उन्होंने मैं repeat both of them because I think they're both true. एक ये है कि मैं 5 साल में था तो मेरे माँ बाप मुझे स्कूल में छोड़ गए और अभी तक भी लेने नहीं आया. तो मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाता रहता हूँ और अब हर काम जिस स्कूल में किया जा सकता है वो मैं कर सकता हूँ. पढ़ाने से पढ़ने के वाइस and that was the best thing that happened. तो मैंने जिंदगी में कोई खातर खास अच्छा काम नहीं किया except being a student, and इससे अच्छी जिंदगी मेरे ख्याल में हो नहीं सकती. ये एक amazing किस्म की मेरी good life. So एक तो बात ये, दूसरा जो आपका वो जो linkages वाली बात है कि how do these things get linked. So my motivation और climate में आने का, I think that's how I carved my little space in climate. My interest was always human well-being. आप पाकिस्तान में बड़े तो असली मसला वही है, right? And when a lot of people were coming to climate because they were interested in climate, I was coming to climate because I was interested in development, and that was my niche. और उसमें मेरा ख्याल उसमें पाकिस्तान का था कि इसका किसान से क्या होगा, इसका हमारे शहरों पर क्या असर पड़ेगा, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया वो उसी. And the youth work is also one of the most fun work I've done. The other fun work is what I'm doing now, when I'm doing a major study on philanthropy in Pakistan. Pakistani, given by Pakistanis in Pakistan, not Pakistani. But youth work. To link these things. I learned a lot in that. इसलिए नहीं कि मैं youth को जानता हूँ, but it was clear that young people are. Where my statement then was and remains that the future of Pakistan, good or bad, will be decided by those who are between 15 and 29 today. 15 to 29 आपकी official definition. दो चार चीजें ये इसमें कोई फख्र वाली बात नहीं है, that means की सारी responsibility है. तो आप कर लें, ठीक है, हमें mention कर लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरी नानी बड़ी सारी नानी आके मतलब कि नानी दादा को नहीं पता कैसे एक उंगली किसी के सफर में कम से कम 3 नंबर. Right, but that statement is a statement of responsibility. उसकी सिर्फ मैथ लॉजिक आप सारे के सारे पाकिस्तानियों को अपने कॉरिडोर में खड़ा करें, हर 4 में से 3 जो है वो क्रिएटिव रन. आप किसी दफ्तर में चले, आप कंप्लेन करते हैं यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप पार्लियामेंट चले जाएं, सेक्रेटरीट चले जाएं, आप गवर्नमेंट चले जाएं, सडनली आपको जो भी टॉप पे लोग मिलेंगे, दे विल बी यंगर देन जब वो उसका ताल्लुक ना आपकी ब्रिलियंस है, ना इस मोमेंट से, ना इस और चीज से, आपकी डेमोग्राफी को. And this will continue between now and 2048, right? So report हमारी इसलिए पार्टी पॉपुलर हुई कि ये सारे जो सियासतदान हैं, they all suddenly got interested in this, all started backing it, and I think वो सिर्फ 2 पैराग्राफ थे जिनकी वजह से
And वो मैं टीवी पे आके बारी बारी बात करता था, suddenly realized कि यार movement क्या है. And what I was saying was that every election between then and 2048 will be determined by first-time voters. इसलिए नहीं कि वो बड़े अच्छे हैं, उनको सारे सवालों का जवाब पता है. ये भी खाब करता है कि मैं नौजवान हूँ, इसलिए मेरा आंसर राइट है. सर वाई इतनी प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत हो, इतनी बड़ी क्योंकि गलत ये है कि आप सोचें कि मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए मेरे सारे आंसर राइट. It was a probability as well. But what I'm talking about is just a demographic transition. After that, you will become an aging man. So, एक में क्योंकि young लोग बैठे हैं, and this is important for you. So, एक के लिए this is a statement of responsibility. So, if you see things going wrong, I'm sorry. If they have a right, they'll be benefit after you. Now, that doesn't mean you're watching the need. I think the most interesting mathematical thing about youth as a development structure. अभी climate में related. वो ये है कि unlike many other things, it is a very fleeting mode. तो youth क्यों important? Youth इसलिए important होता है कि एक age आती है कि 15 से 30 के बीच में. When suddenly citizens become much more important actors than they have ever been. So आपकी physical completion हो जाती है, physiological. For the first time, you become an economic actor. For the first time, you become a political actor. Right? For the first time, you become a social actor. Right? आपको आप कोई sideline नहीं कर सकता है कि नहीं ये बच्चा है और ना आप होना चाहते हैं. So suddenly there is an infusion. और ये entrepreneurship से इसका especially ताल्लुक है. Why do new ideas come? इसलिए नहीं कि वो कोई smarter था. इसलिए कि suddenly there is an infusion of newness. वो मोमेंटरी होती है. एंड ये जो बूम पे होता है इसकी एक एंटरप्रेन्योरशिप हमने इंडिया में देखा, हमने मलेशिया में देखा, हमने चाइना में देखा, हमने मल्टीपल प्लेसेस यूथ बूम के साथ देखा ग्रोथ. वो इसलिए होती है कि if young people are becoming economic actors for the first time, वो अमीर हो या गरीब हो, they have to spend. Right? मैं कॉलेज पहली बार जा रहा हूँ, मैं कंपनी पहली बार जा रहा हूँ, so on so forth. That gives the entrepreneurs market part. And if the entrepreneurs themselves are young and know this market, they can figure out the young take I'm going to long, but this is important. Another thing about you, especially for young people, this is my biggest learning there is, ये इसलिए भी important segment है कि ये बेहतर नहीं है ज़्यादा. So मैं आपको एक गारंटी करता हूँ, इस कमरे में हर शख्स जो बैठा है will be less young by the time we are done than they were when we started. Right? ऐसे ये मजाक वाली बात नहीं. What that means is कि मैं अगर पॉलिसियां बना रहा हूँ यूथ की आपसे बात करके, by the time वो बनती है तो आप यंग रह नहीं. एक नया यंग आ जाएगा जो कहेगा यार तीन बुड्ढों को क्या बोलते. So it is a moving target. And sorry, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ. That is what relates to development, and that is what relates to climate, because climate is also a moving target. You now have a cohort. अगर आप इनकी energy को capture कर लेते हैं at that moment of newness, that drives a lot of things in that requirement. Thank you very much, sir. It was a delight learning from you. मैं quick अगर एक final comment और फिर question लेते हैं आपसे कि सर आदिल Najam was part of intergovernmental panel 2007 में जिसको Nobel Peace Prize मिला, उस panel पूरे को. He's one of those who got this actually. फिर इनको सितारा इम्तियाज मिला. Then he was VC Lums, then Human Development Reporting. Then he became a dean at Boston University. So बहुत सारे honors हैं. He is a star by any definition. So we're really honored to have him, sir. A big round of applause. The floor is yours. Wait, question, please. Sir, in our society, we say that a degree is important for getting a job. So you said that a degree is not important. So how to break that, that societal norm that we can get a job without a degree? If you're
allow me दोनों statements में थोड़ा सा tweak कर दूँ. I'm not saying कि degrees are not important. मेरी तो कारोबार मेरी रोजी ये है कि वहाँ पर लात मारते मेरी मैंने 2013-14 में 12-13-14 में हर लम्स का जो ग्रेजुएट है उसकी डिग्री पे साइन किया मैंने. दुआ भी पड़ी थी. हर डिग्री भी पड़ी थी. 8 साल में DU की डिग्रियों में साइन करता था. डिग्री I believe in, not like a degree. But what I'm saying is, so I do think education is important. I do think degrees are important, but not in the way. आपकी point I think सही है. जो पहला वाला है कि ये जो हम जो simplistic कर लेते हैं और वो society नहीं है, वो हम खुद भी कर लेते हैं. उससे I think हमारी education भी suffer कर रही है. This assumption और ये इस assumption के पीछे reality भी है कि एक बार कि वो जो हम हर इश्तिहार में लिखते हैं कि मुझे ये फलानी पोस्ट है, फलाना ग्रेड है, फलाना वर्क है, ये रिक्वायरमेंट है, इतने साल और ये वाली डिग्री. Right? So हमने एक तरह से because we have implementation issues, we use degrees and experience as a surrogate for actual knowledge and skill. Right? It is an indicator of knowledge and skill. लेकिन जब हम उसको मैकेनिकल बना देते कि मैं डिग्री क्यों कर रहा हूँ कि वो फलानी जॉब के लिए चाहिए, एज अपोज टू मैं डिग्री इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यार उससे कुछ नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज को मैं यूज करूँ. मैं कल भी कहीं ये बात करते हैं, हमारी रिपोर्ट में was also very obvious. I hope this doesn't offend anyone. एक बड़ी अजीब चीज है. There is a lot of people मेरा LinkedIn भरा हुआ है of people who say कि मेरी ये डिग्री है लेकिन मुझे जॉब नहीं है, can you help blah blah. मैं कैसे help करूँ? But there are interesting thing is you talk to employers and invariably, at least when we were doing the research, employer ये कहता था कि यार बंदा नहीं. And I would say ये दोनों statements कैसे true हो सकते? हर employer कहता है मुझे आज के दिन कम से कम 5-4 हैं. एक तो मेरा अपना है, अगर you know anyone, I am looking for someone. I know 5 or 6 people who have asked me, do you know someone who will be good? मेरे पास ये बात. So what is happening? जो सख्त बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि what is happening is not कि वो रखना नहीं चाहते. They are not finding the skills that they want in the people who are available. There is a market disconnect. मैं अगर जाकर कह रहा हूँ कि मेरे पास ये डिग्री है मेरे पास, वो कह रहा है कि यार डिग्री तो है तुम खत लिख सकते. That's where our problem of the degree also is. I realized yesterday in the conversation, it's very important for someone who's in agriculture. आपके lower end पे हमारी गुर्बत इतनी है, and yet people cannot find workers at the lower end. Right? मैं I'm now talking field workers in a खेत. So there is a serious mismatch जो हमारा इन सारी चीजों को हमने जो structures बनाती हैं जिनका एक sense बनता था. Right? Partly it is कि मैंने जब डिग्री ले ली है तो अब मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा कुछ करूँगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास बैचलर या मास्टर की डिग्री और मैं टैक्सी ड्राइव चलाता, immediate reaction was I had it number. As opposed to कि I am a self-employed entrepreneur who is totally in control of my life, right? The answer ought to be कि मेरी टैक्सी से मेरी I should be able to lead a good life. So I hope I am not trespassing on people. हमारे अपने जो हैं हमारे से सिर्फ not only our parents but we ourselves, our expectations from education and our delivery of good education is a very serious problem. मेरा अपना तो कई सालों से मैं फिर बोल देता हूँ. I would much rather have half the number of universities in Pakistan that are twice the quality than twice the number of universities that are the same quality as now. This is other, we are producing people who are not employable, we are producing teachers who shouldn't be teachers, we are admitting students who shouldn't be students. इसमें कसूर नहीं है, इसमें कसूर है कि we have to get the system right at the bottom. आप ये pipeline ही नहीं, then the whole system gets messed up. Hi, I really enjoyed the chat. So, things that you said previously, like on the time machine question. So I feel at least I want to go either 100 years in the future or around that time, and precisely because there's something very different happening, right? And I think maybe the reason for that is because a lot of us and around the world, it's the innovation so called is actually more iterative than actually discovering something new.
I don't know, I'm trying to understand, what do you think or what do you feel is the reason for that? And maybe how can we structure our education system around certain fundamental principles where we engender that sort of not necessarily, I mean, ठीक है, iterative करना है, but we also have that focus on we try to discover new things which people apparently now just are either too afraid to do, or I don't know what the, I mean, is it systemic or what is it? Yeah, excellent question. Excellent question. And you know कि जब कोई कहता है excellent question, उसका मतलब है उसको जवाब नहीं आता. And they're fishing for time. So excellent question. I do think it's an excellent question. I might take the question to a different place, लेकिन happy to bring it back. लेकिन it gives me the ability to take it to another place which I also think is interesting. So अगर हम ये 100 साल वाली बात करें जो आपने भी, I don't think एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करने की जरूरत है. वो आपका ट्रेंड देख के वो तो आपके पीछे भाग गए. कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं दुनिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप की घोषणा कराना चाहती है. कोई ये सेंटर ना बनाना चाहते. तो वो तो इट्स नॉट अ सप्लाई प्रॉब्लम एट ऑल. वो तो आपके पीछे भाग गए. They would love that. The interesting thing is कि the word, दो वर्ड्स हैं, एक है इन्वेंशन, एक है एंटरप्रेन्योरशिप. I am guessing 100 years ago, entrepreneurship was not even a word. I think वो शम्पीटर का पेपर आया भी नहीं, where he talks about it. And जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, they would have Tesla की आपने देखी होगी. He would not have called himself an entrepreneur. बेचारा वो तो बहुत ही माठा entrepreneur था. उस दूसरा ले गया था सारा, क्या नाम है उसका? नहीं ऐसे नहीं यार, वो जो बल्ब वाला. Edison was the. But even Edison would call himself an inventor. So the flavor of the day was invention. The flavor of today is I don't find anyone who says कि I'm an inventor. And कई बार मुझे दुख होता है. I wish there were more inventors also. अच्छा, इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर वक्त जो होता है उसकी अपनी रियलिटी होती है. आप बुरा भी मानेंगे, दोस्त छोटी नहीं है. कल कर लें. इनके कमरे में 3 तस्वीरें लगी हुई. 3 उम्मीद आती है. बट मैं सीरियसली उन तीनों में कॉमन ये नहीं है कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी. उन्होंने 3 बड़ी कंपनियां ली. राइट, कौन थी? Elon Musk, Steve Jobs, and Richard Branson. Right. So, but what I'm saying is, मैं आपको बात नहीं कर रहा, ये हम सब की बात कर रहे हैं. हम जब एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं बात, तो जिसका हमें चस्का है, I think what is driving us, मैं ये नहीं कर रहा, ये गलत है. I'm just saying that's the reality. What we are driven by is actually not innovation, not invention. And इसमें कोई बुरी बात नहीं है. हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, इन्वेंशन की भी जो सक्सेस, मैं आपको एक कमाल किस्म की टेस्ला जैसी चीज बना दूं, अगर वो बिकती नहीं है तो आई विल फेल. और मैं आपको एक फजूल किस्म का कोई हेरोइन डिलीवरी मैकेनिज्म बना दूं और वो बिक जाता है, तो आई एम सक्सेस. अगेन मैं बारी बारी कह रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज द स्पेस यू आर इन. द स्पेस यू आर इन इज यू आर सेलिब्रेटिंग इकोनॉमिक सक्सेस. दैट्स द मोमेंट वी आर इन ग्लोबली. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस इसलिए है, एंड द रीजन आई थिंक यू आर एन इंटरेस्टिंग जनरेशन इज इस स्पेस ने मेरी ग्रीड को और मेरी इंक्विजिटिवनेस को कंबाइन कर दिया. राइट, एंड सम ऑफ दैट एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी कम्स फ्रॉम देयर. आपने जिक्र किया था किताब का, डॉक्टर तारिक नूरी के साथ we did this book called Civic Entrepreneurship. Actually, it's a 7-volume book. It's on sustainable development. We looked all around the world. कि entrepreneurship का हमने concept लेके, it wasn't about IT commission में एक आधा ही होगा. Bitcoin किस्म की चीजों का था, but not even Bitcoin. Shell पे, Argentina में financial crisis के बाद people created new currencies of seashells. But what we were thinking about was कि यार ये entrepreneurship development sector में क्या होती है, right? It's a 7-volume book, जो पहले 6 वॉल्यूम है, each region की, एक एशिया की, एक अफ्रीका की, एक लैटिन अमेरिका की, और फिर there is a final volume, first volume actually, Tariq and I wrote called Civic Entrepreneurship, civic space. But one of the things we pointed out there, जो सारे literature में all of you know, entrepreneurship invention नहीं होती. Right? So entrepreneur का कमाल वो है कि मैं मेरे सामने ना in some ways I can see this. There are things moving here, ये आ रहा है, उधर से force आ रही है, इधर से Ukraine war आ रही है, इधर से YouTube आ रही है. There are things happening in front of you. And the skill of the entrepreneur or the magic of the entrepreneur is to pick out
in eventually winning stream. And वो उस घोड़े के ऊपर सवार हैं, right? They don't have to invent something, they don't have to change anything, but the thing is to be able to read this space जो बाकी लोगों को खाली space लगता है, right? वो beautiful mind की तरह वो जब देखते हैं जब कुछ चीजें नजर आती हैं, right? But that's entrepreneurship. Now, so what I'm getting at is that we should know what we're doing, and we should know कि किस चीज के नंबर. I do think invention के भी नंबर होंगे, and I think in the life sciences space, a lot of entrepreneurship is closer to invention than in some other spaces. एक जो मुझे इसमें सिर्फ नेगेटिव लग रहा है, because आप लोग अब mainstream, you are not the revolutionaries, right? You are the IBMs, you are the Exxons, you are the mainstream. तो हर जो दूसरा इशू है ना वो आप पे ट्रिगिंग करता है, वो आपके घोड़े पे सवार होता है कि ये मेरी फील्ड में भी है कि मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज इज एन एंड इशू. एवरी इशू वांट्स टू बी क्लाइमेट चेंज and I think in some ways both entrepreneurship at large and IT in particular are exactly like that कि मेरा जो भी इशू है उसमें इसका क्या ताल्लुक है, and in a way है भी, लेकिन I do hope कि sort of we don't limit it to that because there is a lot of real value in those other spaces जहां आप actually कर्व को बेंड कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली अगर आपने तो चौथी तस्वीर लगानी है यू कैन आल्सो गेट देयर, राइट? वो ही तीन तस्वीरें हैं लाइक गुड डेज ऑफ पास्ट पेपल वगैरह वाले थे. दे वर अबाउट डूइंग थिंग्स दैट पीपल बिलीव्ड कुड नॉट बी डन एज अपोज्ड टू डूइंग थिंग जो कहीं और हो गया और मैं यहां भी कर लेता. So that to me is the interesting space. वो आपको वाटर में भी मिलेगी, वो हर जगह मिलेगी आपको, but that is a different thing. So I don't know where we will go. Maybe AI will open sort of new questions. अभी तो टॉय है, लेकिन जब हम उसकी टॉय की स्टेज से निकल के जो इनएविटेबल है और हो रहा है, right? What people are getting fascinated is मैंने चैट जीपीटी से पूछा मेरा दादा कौन था और उसने मुझे ऐसे लिखा. Right? ठीक है, वो टॉय है, उसका स्पेल चेक आया था. हाँ, but when you go beyond that and now say कि यार अच्छा अब इसमें से मैं वो चीज निकालता हूँ जो किसी ने सोची नहीं, as opposed to वो चीज सिर्फ निकालता हूँ जिसमें बहुत पैसा है, as opposed to का मतलब ये है कि वो second aspect also has to be met, right? But that is my sense. मैं what do I know? मैं तो स्कूल में If I may add one comment, I mean the definition here. Innovation is just connecting the dots and creating value. Entrepreneurship is capturing value. ये सादा सी अगर अल्फाजों में समझा रहे हो कि आपने existing resources पे leverage करके एक नई meaningful arrangement बना. This is innovation. Like Uber करीब को अगर आप देखें, गाड़ी पहले थी, traveler भी पहले था, तो एक ऐप ने सिर्फ दोनों को connect किया, कुछ भी नया नहीं, but वो meaningful arrangement, it creates value और value capturing करना ये कि हर ride में एक share उनको जाता है. This is not to be able to see what is happening around you. It's, you know, strategy, very favorite definition of strategy is the attempt to see around corners. And what entrepreneurs do is not strategy, which is, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि in a way what they see is कि there are realities in society, demand की, need की, and there are realities in technology. Right? इस तरह आप कह रहे हैं. They can see what I cannot see in how to connect them and capture the value of it. यूथ का माइंडसेट कि किसी तरह भी अपने रिसोर्सेज यूज करके बाहर जाना है. मतलब बहुत से लोगों को मतलब ये चीज़ आपको इवन कहा जाता है कि आप अप्लाई करें, यहाँ अप्लाई करें, वहाँ अप्लाई करें, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. और इवन पाकिस्तानियों को माइंडसेट भी ये बनाया गया कि आपकी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं होती इस मुल्क में, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा. तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें. यार ये सोची डाल देता है
एक तो इसलिए कि मैं खुद बात सहमत था, मैं क्या जवाब दूं इसका आपको मगर मुझे आपको मैनेज करना भी गाना। दूसरा लेकिन सोची मैं इसलिए पढ़ गया हूँ कि कल मुझसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा गया है, टॉक इन हिस्ट्री किया एंड इट इज लिटरली द सेम क्वेश्चन, सो देयर क्लियरली अ रियलिटी ऑफ इट। पहले भी कभी कभार पूछा गया था, लेकिन टू टाइम्स यू नो अब नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ ट्रेंड, दो डेटा पॉइंट होंगे, एक दो मैं और चेक कर लूं। So there's clearly to it. मैंने and we kind of what I said yesterday. Again, knowing कि you know मैं जो बोलूँगा मेरी बाइस कह लें whatever, मैंने जो जिंदगी में पहला पर्चा लिखा था 14 अगस्त 14 अगस्त 1987, हमने एक छोटी सी किताब छापी, it was the first book I ever published, इधर मैं पाकिस्तान में पढ़ा, and it was a collection of essays by young people, and chapter मेरा जिसमें पेपर था उसका टाइटल था द ब्रेन ड्रेन सैबोटेज। हिंदी पाकिस्तानी में लिखे मेरे आगे करेंगे कि कितनी बुरी चीज है। और फिर मैं सोचता हूँ कि फिर यार जो अच्छा इन अ वे मैं पहला जवाब आपको देता हूँ जो मेरी जो एवोल्यूशन ऑफ माय ओन थॉट्स आई डोंट थिंक इट्स चेंज बट इट्स अबाउट। पहला जवाब ये है कि आप में जाना चले जाए, आप मुल्क से जा सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। ये वो एक सॉन्ग भी है ना, कौन सा है, होटल कैलिफोर्निया उसकी एक लाइन है, आप जा सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, पर मेरे जैसे वालों का ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे छोड़ देंगे शायद। सो एक तो इसका लेवल हुआ। दूसरा आई थिंक द सीरियस लेवल इज कि आई थिंक एवरीवन हैज नॉट ओनली द राइट बट मे बी द ड्यूटी to find the best opportunities they can for themselves and their career and their betterment wherever they can find. मैं बड़ी सीरियसली बात कर। अब अगर आपने पढ़ने चीन जाना जाओ, अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो आपको लीडरशिप पोजीशन दे रही हैं और माल काम करानी है, मुझे नहीं समझ आती है जो लोग कहते हैं ना कि हमने इधर रहकर मुझको बड़ा एहसान किया, मैं तो हो गया हूँ जा नहीं सके फिर इधर आए थे, फिर सॉरी बन जाती है महंगी बात और अगर किया भी है तो वो सारे मुल्क की प्रॉब्लम दादा किसी। तो मैं ना उसको मानता हूँ ना मैं इसको मानता हूँ कि बात बड़ा किया है उसने बड़ा तीन मान, राइट, कि उसको सारे वो अकले खोला उसको सारे लोग कि मैं आया हूँ अफ्रीका से, मैं थानू दसना किस तरह 8 साल का भाव तो पता नहीं मैं तो आपको क्या बताऊँ। पॉइंट है कि फॉलो लेट मी कम बैक टू द सीरियस पॉइंट। सीरियस पॉइंट इज एवरीवन हैज द राइट एंड आई बिलीव to do the best for themselves. That is the way you serve your country. That is a way you serve your country. A way. ये पहली स्टेप। प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम वो है जो उस ग्रीक शिप की बेसमेंट में डूब। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आई एम सो गुड और यू आर सो गुड कि दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी या दुनिया की बेहतरीन कंपनियां इसके लिए। प्रॉब्लम ये है कि क्या मैंने यहाँ हालात ऐसे बनाए कि आउट ऑफ डेस्परेशन यंग पीपल आर मेकिंग डिसीजंस दैट यू नो आर नॉट रैशनल। वो है लम्हे फिक्रिया हम सब के लिए पूरे मुल्क में। वो नहीं है जो जाके जो है ना दुनिया की बेस्ट इन्वेंशन नहीं करते, जहां मर्जी जाओ करो उसका फायदा वापस आने। उन दो को हमें एक तरह से डिसेग्रीगेट करना, पहले वाले को इनकरेज करना है और दूसरे वाले की जो कंडीशन है। लेकिन वो जो बच्चा जो है जो उस कश्ती में बैठा हुआ था वो बेवकूफ नहीं था, उसको ऐसा नहीं पता नहीं था कि क्या हो सकता है, उसको दिस वाज अ वेरी रैशनल डिसीजन। रैशनली, राइटली और रॉन्गली अलग बात है, रैशनली केम टू द कंक्लूजन कि माय अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर बाय टेकिंग दिस अमाउंट ऑफ रिस्क। That is the equation we have to change. उसके साथ अगर वो आप नथी कर लेंगे, right? सलाम साहब ने बाहर जाके मुल्क पे एहसान किया था, उनको छोड़ा नहीं, right? This is that तो सलाम स्टोरी। आप उनको निकाल भी सकते हैं लेकिन छोड़वा नहीं सकते, right? So that I think is a very great thing. सलाम साहब ने सिर्फ दूसरी नेशनलिटी के लिए नहीं, आप ये वक्त सलाम साहब का अगेन इफ यू अलाउ मी, सलाम साहब के आप मेरा एक आर्टिकल है, look it up newspaper में, please do read it, and I start with the story जो उनको नोबेल अवार्ड मिला। किसी ने वो वीडियो वो देखा वीडियो पिक्चर, तो उन्होंने वो तिल्ले वाली कुर्सा पहना हुआ है, तो नोबेल अवार्ड का वो पूछता है तो वो आपको कपड़े बताते हैं
कंपनी बताते हैं जहाँ से आप कपड़े लेंगे, एयरपोर्ट और होटल, वो सारे बुक। ही इंसिस्टेंट की थी मैंने शेरवानी पहननी है, मैं अपनी लेके आऊँ, और सफेद शलवार और नीचे तिल्ले वाले जूते, नहीं मैं पग पे ही आ रहा हूँ, एंड देन सर पे पग, बट द पग इज इंटरेस्टिंग। आप में से अगर किसी ने पगड़ी कभी बांधी है तो जाके वो तस्वीर देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार इसमें कोई मसला है। अगर आपने असली पगड़ी बांधी ना कभी, यू विल इमीडिएटली सी कि मसला है। मैं बताता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि बस पगड़ी थी नहीं था, बचपन में तो बांधते थे। तो वो ठहरे थे एम्बेसडर के घर, जहाँ अवार्ड लेने आए थे पाकिस्तानी, उसकी एक बेडशीट लेके सफेद और उन्होंने बांधनी शुरू कर। देन ही रियलाइज कि फिजिक्स तो ठीक है, वो पगड़ी उनसे बंध गई। तो उसका कुक था, उसको बुलाया कि यार मेरे जरा हेल्प करो, वो फिर भी नहीं हुई। फिर एक ड्राइवर था जो पाकिस्तानी एम्बेसी में था, उसको बुलाया, उसको, और उन्होंने मिलके जो है ना वो पगड़ी वो बांधी। He is the most elegant person in that room, उसमें बादशाह भी है और बाकी सारे लोग। लेकिन जिसने पगड़ी देखी नहीं है, जब वो देखता है कि यार इसमें कोई मसला है, मसला ये है कि ना बांधनी आती थी, बट ही इंसिस्टेड। वो एम्बेसडर ने, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने उनको मना किया कि ये सही नहीं लगी, लेकिन नहीं जी ऐसी चीज ना होता। So the point I'm making is कि वो आप छुड़वा नहीं सकते, लेकिन if the so our challenge here is कि वो जो नीचे वाला है, मैंने बताया ना कि जो out of desperation जा रहा है, that condition has to change, because उसकी reality ये है कि वो तो वहाँ भी opportunity है। आपके ख्याल में वो जो जाएगा उस ग्रीक शिप पे, वो उधर जाके अब्दुल सलाम पर तो कहीं जा भी सकता है, लेकिन the likelihood is not that. So I do think this is important. I worry कि सोशल मीडिया वगैरह के साथ एक बार नाराबाजी बन जाती है। आखिरी चीज इस पे किसी ने जिंदा भाग देखी, मूवी कॉल्ड जिंदा भाग। वैसे तो मेरे ख्याल में मूवी सिर्फ वो देखनी चाहिए जिसमें अहमद रुश्दी के गाने और गुजरात की एक्टिंग हो, जो आपको माँ बाप की जमाने की। ये दिस इज अमंग्स्ट न्यू मूवीज, दिस इज माय फेवरेट। 12 साल हो गए। इट्स पाकिस्तानी मूवी, लेकिन उसमें सीरीज शामिल है, जिंदा भाग। आई थिंक वो हर एंटरप्रेन्योर को देखनी चाहिए। आई थिंक आपको यहाँ स्क्रीन सीरियसली एक तो फन मूवी है, राइडर सॉन्ग फन भी है, वो करीब कुछ नहीं कमर्शियल मूवी, लेकिन जिंदा भाग इज द स्टोरी ऑफ दीस 3 यंग मैन इन अंदरून दफा। और जिंदा भाग का मतलब ये है वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमने निकल, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सैड मूवी, लेकिन आई थिंक वो जो रियलिटी है उसे हमें चेंज करना है, एंड दैट इज द रोल ऑफ एनआईसी, नाइकैट कह लीजिए, दैट्स द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि we have to, like the clubs and I would also say this, कि आप लोगों को पता है, you know this, we have to create people who create jobs for other people, which is better than creating jobs for other people. Why? Partly because वो जो equation है which gets me into the basement of that Greek ship, उस equation को change करना। जो दूसरी equation हार्वर्ड पहुंचने वाली, स्टैनफोर्ड पहुंचने वाली, उसको मेरा चेंज करने का कोई नहीं, लेकिन ये नीचे वाली को जरूर चेंज करना है। दैट इज वेयर एंटरप्रेन्योरशिप कम्स इन, वेयर पीपल से कि यार ना हमारी होती है। आखिरी बात एक और मुझे करने ने एक्चुअली में लंबी बात करनी इतना आसान होती भी नहीं। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ, अगर हम सोचते हैं कि यार एक्चुअली अगर ये रेस ही थी तो पीपल हेयर जो क्रिप ज्यादा करें लेकिन हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ समटाइम्स। सो रैशनल डिसीजन करना मुश्किल, लेकिन it's not as simple as we might. Last question. I said, of all the leadership roles in big organizations, mashallah, you've been in, I think it would help the startups if you could share some insights, because they're looking, approach different big organizations, pitch to them, make contacts. So what would be good practices for them going this way, coming from your perspective? Thank you, यार। Good practice का मुझे इतना नहीं पता, experience से बात थोड़ी सी कर सकता हूँ। So I said this in the beginning because I thought we could go there, so अच्छा है मुझे opportunity मिली। आपकी Air Force ने done something called the Jinnah Center for Character and Leadership and asked me to the senior advisor to them. So I've been thinking a lot about this उनके साथ and doing some trainings for them. The reason I took that on was पहले तो उसमें नाम जिन्ना था, and I just like the fact not only कि जिन्ना साहब है लेकिन नाम भी जिन्ना, right? वो अलग अलग था। दूसरा ये कि character and leadership are together.
And I think that's the thing that gets missed. And what I mean by that is the following. मैं पहले कहता हूँ कि एक लीडर होता है और एक लीडरशिप होती है. Leader is clearly a noun. Leadership can also be a noun, but it's probably a word. और ये दोनों चीजें जो हैं जब कंबाइन हो जाती हैं तो देन आप उनकी डिसीजन फॉलो करते हैं. लेकिन it is not necessary to combine. You are a leader by virtue of a position you hold. So you are right कि I hold leadership positions as a noun. किसी ने मुझे वाइस चांसलर बना दिया, किसी ने मुझे डीन बना दिया, किसी ने मुझे WWF का प्रेसिडेंट बना दिया. Leadership as a set of practices comes from behavior, not from the authority endowed on me by a position. And that's the challenge. Or at every level, एक तो ये कि leader सिर्फ what we find in all institutions, at least जो मैंने देखे, leader जरूरी वो नहीं है जिसकी position कहती है कि ये leader. मैं आपको इमरान आपने देखा होगा श्योर यू गो टू अ मीटिंग राइट एक कोई साहब बैठे होते हैं बड़ी वाली कुर्सी पे मुझे उसको बैठने से वैसे ही बड़ा डर लगता है लेकिन इफ यू आर इन अ मीटिंग फॉर एन आवर केयरफुली वाचिंग नियरली एवरी मीटिंग यू रियलाइज कि दैट पर्सन मे और मे नॉट बी द लीडर कोई एक शख्स होता है हु बाय वर्च्यू ऑफ देयर आइडियाज वो जब हाथ उठाता है ना तो एवरीवन पर सर अच्छा ये अगर बोलेगा तो ठीक बोलेगा या कोई होता है जो बड़े केयरफुली सुन रहा होता है आपने तो कहते हैं कि मेरा ख्याल है आप ये कह रहे हैं एंड जस्ट रीफ्रेजेस एवरीथिंग इन अ वे दैट इट बिकम्स अ की टू ओपन द प्रॉब्लम राइट या कोई होता है एकदम उठ के मारकर उठ के ऊपर लेना शुरू कर देता है व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ पर्सन हु इज एंडाउड द अथॉरिटी टू बी अ लीडर एंड समटाइम्स व्हेन दे आर गुड दे डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप but leadership comes from multiple places. Now, if you are endowed with the authority, आपको किसी ने leader designate कर दिया, या आपने खुद ही अपने पैसे लगा के बन गए, CEO बन गए क्योंकि मेरी कंपनी है और कौन बनता है? That doesn't mean that you have yet demonstrated leadership, but it does mean that you have a higher. A, it means two things. A, you have a higher responsibility to demonstrate leadership. B, you have a higher. You are privileged to have a higher likelihood of demonstrating, of having the opportunity to demonstrate leadership. गलती दो किस्म की होती है एक वो होती है कि जो हमें से बैठा होता है कि यार मेरी पोजीशन लीडरशिप की नहीं है तो मैं क्यों लीडरशिप लूं ये भी आपने घरों में भी देखा होगा अपने फैमिली से देखा होगा अपने दोस्तों में देखा होगा कि एक हो रहा है गुफ्तगू हो रही है 15 लोग बैठे हैं देयर इज समवन जो एकदम इनिशिएटिव अच्छा जी मैं कुर्सी उठा के right? They just demonstrate leadership rather than being asked to do something. And they invariably rise because other people are noticing. People notice कि यार ये तो पहले खुद कर रही थी. So now we are going to capture that. So what I'm trying to get at is I don't know कि इसका कोई magic formula है and I don't think इसका कोई magic formula. Different people come to leadership differently. मुझे वो जो किताबें होती हैं interesting होती है कि जी वो मैंने लीडरों से बात की और सारे से बात की 7 बजे से पहले. Now that may be true. I don't deny that. मैं क्योंकि 7 बजे से पहले नहीं उठता और जल्दी नहीं उठता रात को लेट काम करने वाला सोने वाला आदमी हूँ so maybe मेरी bias है लेकिन what I do know is कि maybe many leaders wake up early but I know enough people who do wake up early and are not leaders and I also know many people who are leaders and don't wake up early so मेरा जो academic mind है ना वो इस किस्म के टोटकों पे नहीं जाता लेकिन जिस टोटके पे वो जाता है कि there are some virtues that enable you to demonstrate leadership, meaning that others will recognize you as a leader. I do think character is central. I do think integrity is central in that. Leader, popular होना, सख्त decision लेके वो निकाल सकता है if people think that they are making a fair decision, integrity one. I think kindness is a virtue. Leaders can do very, very tough things, but with kindness. Right? मुझे आप फायर कर लें, मुझे गुस्सा भी आप पे चढ़ेगा. But it is a question because you will come back and lead them. So if we had time, we could make up that list. But I think those lists are not mechanical. They are very often behavioral. Right? मतलब इतनी बार उठ बैठक करोगे इस बजे उठोगे या फलाना खाना खाओगे वो चीजें अगर हेल्प भी करती हैं तो इसलिए करती हैं कि वो दूसरी चीजों को इनेबल करती हैं
But the thing is, I observe this in meetings. I always find meetings very interesting because you can see leadership. And when I've had these positions, they have been often the best recruiting ground from within the organization. Right? एक वो मेरे जैसा होता है जो हर सवाल पे सरजीत हाथ खा रहा होता है कि मैंने जवाब देना है, उसका भी पता लग जाए कि वो मैकेनिकल एक है who demonstrates that initiative, demonstrates that innovation. So unsatisfactory answer, but I think a leadership or leader का जो difference है is central. The magic of leadership is कि अगर मैं उसको बिल्कुल academic sense में कहूँ, the magic of leadership is नहीं कि वो अच्छे लोग होते हैं या बुरे लोग होते हैं. That's not the magic of leadership. क्योंकि कई बहुत बुरे होते हैं. आपकी कुछ चीजें उसमें कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं है. तीन जॉब से लोग करा करते थे, तो मतलब में आता था बात करते थे. He's a hero of mine. मैंने कहा तो you're a good man. कहते बाप के साथ अच्छा नहीं किया, अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा नहीं. कई बार होता है, ये भी जरूरी होता है शायद. Right? So what I'm saying अच्छे बुरे की बात नहीं है, लेकिन one way or the other you get many people to do more than they would have done otherwise. Here, sort of उसका जो empirical evidence. वो स्टीव जॉब जैसा है, वो partly डर से, लेकिन डर से ज़्यादा if you read anything about Steve Jobs, right, you will like it. वो ये नहीं कहते कि वो इसलिए करवा लेता था कि लोग उससे डरते भी थे, असल में डरते. लेकिन much more than that, they knew कि वो जो मुझसे मांग रहा है उससे 10 गुना खुद कर. Right? So you can do it in many different paths. You can do it with kindness, you can do it with whatever, but the task there is to use for the leader, to use leadership to get more out of the people they are working with, right? Or more better than they otherwise would have in a purely bureaucratic. So that's at least my sense of learning. Leadership is very, very difficult in that sense because it requires much of all. Thank you very much, sir. It was such a delight listening to you. I'm sorry मैं बातें बहुत करता हूँ, लेकिन thank you for having me. We love such things because उन्हीं से सीखने का मौका मिलता है, जो शेयर करेंगे. And a big round of applause, guys. Thank you so much. Thank you for having me. Really. So we loved it. We are honored and humbled and personally, I will remember and cherish it. It's wonderful to be here. Thank you very much. Sorry for being here. Thank you. Thank you very much. I'm glad I have a space shuttle now. Thank you so very much, sir. Thank you. Thank you very much. And Shah, please come on stage. Fasi Mehta is a good friend and he is a leading part of Pakistan startup ecosystem. So thank you very much. Thank you for having me here. Sir, Always a pleasure listening to Dr. Najam. आपको ये माइक दिया था अच्छा रहेगा. Thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you very much, everybody. And follow Thank you very much. It was a fun. I had. Sir, Thank you. Yeah. Thank you. This was fun. Thank you very much. Nice.